500 आदमी घेर के रखा मैसी को, सब नेता भी नेता लोग, हम लोगों को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट 10। चलो भाई कंट्रोलर से गिरेंगे। When my mother room. You probably just haven't found the right room yet. Protego! Really don't. I'm sure I'll be fine. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time. Happily, you have the benefit of any... Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, unfold it and have a look. The map is enchanted to help you find your way. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with class. You'll enjoy Mr. Ollivander. I shall reach out when I have more. For now, focus on your classes and pay attention. More than your... If you pay attention, sharpen the pencil. Yes, bro. ये जो रास्ता बता रहा है वो तो लॉक है। इसके हिसाब से यहाँ से जाना है। ये तो Revelio. Protego. Revelio.
Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast it. Levioso! Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the Pause dust करते हैं deflected यार। your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise. Guys, अभी थोड़ा सा मैं YouTube चलाऊंगा, मैं खाना खा रहा हूँ. Let's see something on YouTube, okay? Let me share screen. Display capture. Okay. Okay, cool. Cool, bro. Let me hide this. Hogwarts. Let's play some YouTube dudes. And the sounds. So sound good. Is a week. कहाँ से? Audio. Sure. Now we can see. I know that you've recently been a part of developing a video game, and it seems to me like it's sort of a natural fit for a fantasy fiction writer to work on a video game. How is that, different from what we know you for working on? Well, it actually is considerably different. I've played some video games. I'm not a big video gamer. But the game is called The Elden Ring, and it's a sequel to a video game that came out a few years ago called Dark Souls, and it came out of Japan. My work on it was actually done years ago. These games, they're like movies. They take a long time to develop. Basically, they wanted a world created to set the game in. They wanted world building as a big factor in fantasy and science fiction. You're not only talking about the characters and the plot, but the setting is almost as important as everything else. Tolkien's Middle-earth, Robert E. Howard's Hyborian Age, the foundation universe of Isaac Asimov. I worked up fairly detailed background for them. And then they took it from there. So, it's been several years since I've last seen them, but they would come in periodically and show me some monsters they designed or the latest special effects or the cool things. But the game has been very slowly developing, and now it's coming out in January, I believe. So I'll be as excited as anybody else to see it. So the Game of Thrones finale aired 2 years ago this spring. 2 years later, how do you look back and view that entire series, which became really a phenomenon?
it did become a phenomenon. It was the most popular television show in the world for a time. It won more Emmys than any other show in television history, which is, those are both very exciting things, and I'm very pleased to be associated with it. And it also made me famous, which I have mixed feelings about. I think it was Bill Murray who said, if you dream of fame and fortune, try just fortune first. And there is something to say that. Fame is definitely a double-edged sword. But, you know, Westeros, I've been writing stories about Westeros and the people who live there, the Seven Kingdoms, since 1991, since I began that. It's such a huge part of my life at this point, and now I'm developing more shows for HBO. We have a new show, House of the Dragon, that's coming down the pike, filming right now in London and Cornwall, over in England, probably be on next spring, I guess. But then I'm developing other shows for that, so it's transformed my life, you know, for good or for ill. It is where I am, and I do love Westeros. I love telling stories about it. So there's a lot more stories to tell. Peggy 16. The road of death was stone. And the demigods began to fall. Starting with Godwyn the Golden. Queen Marika was driven to the brink. The shattering ensued, a war that wrought only darkness. Why? What could the demigods ever hope to win by warring? The conqueror of the stars, General Radar. The blade of Mikkel and Melania the Seventh. These two were the mightiest to remain, and locked horns in combat. And so, we inhabit a fractured world, awaiting the arrival of the Elder Lord. Unless, of course, thou shouldst take the crown. A living suit of armor against the ocean's crushing weight. The silver stick.
Age is playful, yet driven by an innate, powerful energy, psychic aura. It uses this subtle force to navigate the lightless trenches and communicate across vast The fallen. Unfortunately for you, you are maidenless. I offer you an accord. Foul tarnished, emboldened by the flame of ambition. Oh, little Rani. We are all forsaken, willful traitors, all. Godric the Golden, the twin prodigies, Mikola and Melania, General Radan. Praetor Rykard, tarnished. Burn the Erd Tree to the ground and incinerate all world. Thank you. Again. The fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord. It's just what hunters do. Are you a hunter? I'm ready to look for my mum. Daddy never came back from the hunt, and she went to find him. But now she's got... Thank you, Mr. Hunter. I love you almost as much as Mum and Dad. Oh, no. Good. Master Wood, you will never listen. Our eyes are yet to open. Fear the old blood. But all did not go well. Him, so that he may be properly honored. Liberate you from your wild curiosity. Do you
भाई असली तो ये है अपना गेम अवार्ड्स। इन्होंने विचर 3 को दिया था राइट, ओवर माय ब्लडबॉर्न। कूल, ठीक है। ओवरवॉच हो गया, सेक्रो। भाई यार सेक्रो में कुछ खेलना पड़ेगा, फिर से मैं खेल चुका हूँ बट एक बार और खेलना पड़ेगा लग रहा है। चलो अब हम अपना गेम कंटिन्यू करते हैं, अपना माइंड ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करते, थोड़ा खेल के देखते हैं। अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं खुद बंद कर दूंगा ये वाला गेम। लेट मी चेंज द स्क्रीन, टीम डैश, ये ब्रो। ओके कूल, लेट्स सी व्हाट्स देयर। As Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Now, the basic card. Done. Leviosa. 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 Good. Now, the basic card. Very good. But the best way to practice is by dueling.
We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Levioso! Good fun. I know. Nothing lucky about it. Class, I hope you're paying attention. That is how you pass Levioso. First duel. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Heckert. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely goblins, is a different kettle of grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. से बात करनी है क्या? You drew Sebastian. He's strong competition. Well done. Nice work. Protego! I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organisation. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. चार्म्स क्लास अटेंड करना है भाई बीटी है यार क्लास अटेंड करना ही तो सबसे बड़ी बट मार्क्स भी बिना क्लास अटेंड किए नहीं आते और अटेंडेंस भी चाहिए 75% हमारे कॉलेज में तो करना पड़ेगा चलो क्लास अटेंड करने चलते हैं फिलहाल तो वही समझ आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या है ये लेवियोसो का नहीं है Protego! नहीं यार क्या बोलते हैं Revelio! क्लास चलो भाई रिवेलियो
Leviosa. ऊपर जाना है ऊपर से ऊपर ही जाना है I guess ये wait चलिए यहाँ पे glass this is the glass settings देखते हैं क्या है थोड़ी quality बढ़ाते हैं हम लोग हाँ चाहिए ठीक है अल्ट्रा है ना सब ठीक है सही है पे ट्रेसिंग भी ऑन हो गई भाई बस सेटिंग्स चाहिए कितना ऊपर है किधर की ऊंची बिल्डिंग है ये Professor Ronan tends to go on a You bit. do look forward to We going. sometimes have to remind him to finish the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Yeah, bro. Accio. H-A-U. Accio. Nice. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport
to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our new student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at them. That's it! Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing... Very good! Happens to the best of us. Nice. आजा. Excellent. Wow. Don't lose your composure. Very good. Points to Ravenclaw. मजा आ गया. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, That's and Miss right. Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. Phew. Not exactly a typical lesson, is it? Not that I mind. Be sharp. That is how it's done. Splendid! Watch this. There we go. Accio. Quite impressive. टाइम हो गया भाई ये तो. अब क्या होगा? Let us make this a bit more interesting, shall we? बिल्कुल मजा आ रहा है. ये काफी मजा आ रहा है यार. मेरे को भी I think we Hogwarts are आना है. well past interesting at this point. What the fuck? I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. हाँ साहब ये बंदी तो वो स्कोर लगा छोड़. आगे लगा. सामने वाली सामने. Accio. Nice. Perfect. That's it. Perfect, bro. Let us see this. Good. Nice. Wait. Bye. Yes! Brilliant! Be sharp. भाई गिरा मत दियो भाई. There we go. Accio. I won, bro. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio.
Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. भाई मैं जीता हूँ मैं क्या बोलूँ? Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I think Professor Ronan wants to talk to you. Until next time. Of course, you can use Accio. A word, if you will. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. चलो भाई एग्जाम कंप्लीट हो गया अब क्या करना है भाई ये क्या Lumos. Revelio. Revelio. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. भाई ये काम क्यों नहीं कर रही है क्यों? What the fuck, bro?
Okay, let's open map. Let's see where we have to go. Okay. Zoom कर देना. Okay. Okay. Cool. समझ गया. Zoom कैसे करना है? LTRT. Okay. पहले main quest करते हैं. Weasley after class. ठीक है, चल जाएंगे. Okay. Hello. How's your first day coming along? Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from a fight. चलना बहुत पड़ता है यार इनके इतना तो मेरे कैंपस में चलना पड़ता था यार जितना एक बिल्डिंग में चला रहे हैं लोग क्या है यार I wish अबे ये क्या बिल्डिंग है I my exercise books to finish my homework for me. It all baffles me. Keep moving. Whoever came. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Extra assignment क्यों मिल रहा है भाई? Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell. Professor? I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring. I shall explain more about them when you begin working. There's an Ollivanders in... There, Mr. Oliver. I would trust him. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavoury local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's... No time to waste.
मैजिक सही है यार, सही है भाई, इसका सही है। मैं जितना देख रहा हूँ ना, इतना स्पेशल अटेंशन मिलता है यार इन लोग को, सही है यार। रिपेयरो सिखाएंगे यार इनको, इतना बढ़िया बढ़िया अटेंशन मिलता है। हम लोग को तो मास टीचिंग होती है, इनको तो एक पर्सन यार। खैर ये बात भी है कि खुलता कैसे है भाई, ये बात भी है कि हम लोग को इंटरेस्ट भी नहीं होगा था। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि इन लोगों को आगे से इंटरेस्ट दिखवाते हैं, मतलब आगे से बताते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। Got a peek at the prefect's bathroom last year. I'd missed class for a week to soak in that up. Ah, there you are. Yeah, good professor. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And these such... I'll start on the task right away, Professor. I'll start on the tasks right away, Professor. I'll start on the tasks right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Flying pages, ये रहा है। कैसे कलेक्ट करूँ? भाई कलेक्ट कैसे करना है? Lumos. Levioso. ये कैसे आया? What the hell, bro? ये आया कैसे? मैं तो कुछ किया ही नहीं। कुछ है यहाँ पे। रिवैल्यू करूँगा। Protego. Revelio. Accio. Got it. Now I think I do have to go to the professor again. What is this, bro? Revelio. Off on another adventure, are we? Can I start this first? What is it? Protego. Protego. Sure. Let's go to the professor, alright? A flying page must be around here somewhere. If only a new student were to help me with my sad predicament. Find the page. Find the page कहाँ है भाई? कहाँ हो गए? पन्ना। नहीं ये गलत जा रहा हूँ। Some kind soul help me. Must be somewhere near. Let's go to whatever. Brilliant. If only a new I think थोड़ा टाइम लगने के बाद ये खुद पास में भेज देते हैं अगर ढूंढना हो तो सही ये बेटर है। Lumos. Lumos get to that. Oh shit. Wait. I trust the preliminary tasks work. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. अच्छा रिपेयरो सिखा रहे क्या? अरे मैं बाहर था एक सेकंड स्टार्ट नहीं करना अभी।
Oh my god. Yes. That's it! Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Repairer. सब गेट इतने बड़े बड़े लगते हैं खुलेंगे नहीं पर जैम है बहुत खुल जाता है Liar. I know you're lying, aren't you? You're making it all up. What if he's not making it up? But he didn't, isn't it? Ugh, what am I missing? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Lumos! Come and find me if you stumble on something. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. White pillar. I enjoy having lunch down by the lake. Except when the giants talk. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Is this the location? Yeah, okay. Now, was it too? Revelio! I think there were dots. How nice to see you, my young friend. Protego! ये बात कर रहा है
Out of that blasted leech. I wonder how many secret. That's my favourite meal. Pie. ये लोकेशन है, I'm damn sure now. That's the last time I had a potion idea that I choked right down. क्या कर रहा हूँ? लोकेशन तो ढूंढ लिया. Revelio. Revelio. Accio. I think there were dogs' eggs as well. But surely those would curdle. Revelio. I think it's for the best that Kagawa is far too easy for Revelio. Revelio. I only speak up in classes where the teacher doesn't deduct house points for the wrong answers. To be fair, I don't say much. Do you think if we asked Sharp? Wait, no. Revelio. Wonder how well our professors did when they were students. Can't all have been top of their class, can they? Lumos. I hope to think of at least. Yes, Professor Binns does drone on a bit. Let's get you back to your frame, little moth. Black only looks out. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Nice. I love it, man. These kind of games are sometimes also good, bro. I should not judge them. These kind of games are also cool. I love it, man. Like, it's a chill game. Like, you are doing something, you have some puzzles, adventure. Let's talk to Alona. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I followed the clues, to be honest.
I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Cool. Now let's track our main story. Okay. Let's do this one. This one. Let's go there. अच्छा हमें कुछ apparels में मिलेगा तो कुछ change कर सकते हैं right? Beard, yes, beard. यहाँ पे भी कुछ है अपने को ये रहा ठीक है offense है ठीक हो गया इसमें तो कुछ नहीं लगा है इसमें भी कुछ नहीं लगा शेप ना टेस्टनेस नहीं है हमारा जो हमारा हेयर पोर्टर नहीं है हैरी पोर्टर नहीं और हमारा ये भी नहीं है भाई ये भी नहीं चाहिए वाह भाई इसे तो वो बना दिया था पूरा क्या नाम है नहीं सब नहीं चाहिए ठीक है इतना ही ठीक है या तो हैरी पॉटर बना सकते हैं या तो फिर पीकी ब्लाइंडर बना सकते हैं दोनों ही नहीं चाहिए भाई और कुछ चाहिए अपने को नहीं इन्वेंटरी में क्या है अपने पास ये क्या है हाँ ये तो पता है यहाँ जाना पड़ेगा यार बॉर्गियन एंड बर्जेस कैसे जाऊँ यार एक तो वो ये जो ब्लैक था कलवा उड़ना मना कर दिया है वी डोंट हैव एनी शाफ्ट लाइक ब्रूम रहते हैं ना वी डोंट हैव ब्रूम टू फ्लाई सो हाउ विल इट गो शूट अराउंड Let's talk to who is this? Unai? Hello, looking for me? Unai, yeah, bro. I'm looking for you, bitch. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I tried to brew some Amortentia once. It was an awful disaster. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Wow. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Protego! Protego! क्या आता हूँ waterfall? Oh no. नहीं आ रहा हूँ सही आ रहा हूँ मैं सही आ रहा हूँ sorry सही आ रहा हूँ भाई जल्दी आ रहा हूँ मैं just to wait Accio! Lumos. That's right she's up right
ये भी अच्छा गेम है. I should not judge it by the cover. नहीं, अब तो abandon करूँगा तो नहीं बने सही. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Accio! Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Like we already... Accio! Lumos. That's the Forbidden Forest on the left. Leviosa! To students, as the name implies. Reparo. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. Accio! She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the classroom. चल नेट साइड चल भाई ये नेट के साथ जान तो रहा हूँ लेकिन इतना दूर कहाँ है जा रही कोक्सी में मेरे को डर लग रहा है भाई. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. Protego! And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Huh?
Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Letty. Thank you. मेरा पैर दुख गया उस बंदे को देख देख के बताओ. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. What it takes to keep a clean house is staggering, even with magic. We're hearing back soon about the position that opened up at the ministry. I sent my letter of inquiry last Monday. My plan is to have enough galleons one day that I don't have to work at all. I shall spend my days baking treacle tarts and denoming the garden. I have a terrible curse where I can't lift tools or do work of any kind. Only a hairy-hearted sod would cast Flipendo on a cow. Flipendo might seem like harmless fun, but not when it's like a lively snare. Some of the new students. No need for sleeping drop. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Maps there. Oxford Church. Okay. Oh, nice. भाई पहले हाँ यहाँ पर पहले क्या है मुझे वही था ना तो अपनी छड़ी बनानी है दुनिया जाए भाड़ में भाई छड़ी चाहिए Merlin's blooming beard. बेल बजाओ What? Bitch? I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. भाई क्या बढ़िया डब्बा बनती है इनको वापस दिख रही है Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? How intriguing. Curious indeed. भाई यार ये तो पता करना पड़ेगा पता करते हैं ये तो इतनी सारे ऑप्शंस थे कि हमें कैसे पता यार कौन सा अच्छा मैं तो कभी देखा भी नहीं यार ये मैंने आज तक देखी नहीं है हैरी पॉटर मैं कैसे बताऊंगा कैसी होनी चाहिए अबे मैं खुद की वॉन्ड बनाने बोल रहा है भाई इतने सारे ऑप्शंस हैं मैं कौन से ऑप्शन के साथ जाऊं समझ ही नहीं आ रहा है How intriguing. खुद की छड़ी बनवाने बोल रहा है अबे तो भाई देख तीन ऑप्शन है पहले वैंड का कोर कैसा होना चाहिए यूनिकॉर्न हेयर ड्रैगन हार्ट स्ट्रिंग फिनिक्स फेदर किससे होना चाहिए फिनिक्स फेदर चल ना कौन सा अच्छा तू जानता है ये सब सुना Phoenix feather. Exceptionally rare. And a core with a strong sense of initiative. अच्छा ड्रैगन बहुत है क्या अच्छा और वुड टाइप कौन सा करूं Curious indeed. अबे यार 100 तरीके के स्प्रूस सिंकामोर वाइन वॉलनट चेस्टनट विलो यू और भी इतने How intriguing.
कुछ फर्क ही नहीं है भाई। फेदर पे ही होता है, फेदर जो रहता है उसी पे मेन पावर रहता है। अच्छा मान ले यूनिकॉर्न या तू यूनिक फेदर में कर सकते हैं यार, समझ ये सब। Curious indeed. जो ड्रैगन बहुत है तो यूनिकॉर्न लेना चाहिए या फिनिक्स फेदर्स, राइट? मैं फिनिक्स ले लेता हूँ। फेदर फिनिक्स थोड़ा ज्यादा रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और How फ्लेक्सिबिलिटी में intriguing. पूछ रहा है क्वाइट बेंड होना चाहिए, फ्लरी बेंडी, फ्लेक्सिबल, स्विशी या हार्ड, किस टाइप की फ्लेक्सिबल है भाई? Curious है भाई, indeed. फ्लेक्सिबल स्प्रिंगी भी है, स्लाइटली स्प्रिंगी, स्विशी। नहीं ना, वही तो नहीं दिया है, डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, बस ऑप्शंस दिए तो कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को, क्या पता। अब बस डायरेक्ट बोल दिया वुड टाइप सेलेक्ट करो, कुछ लिखा नहीं है इतने, मतलब कम से कम 30 तरीके के वुड्स दिख रहे हैं, अब उसमें किसी का कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है, बस सेलेक्ट कर लो एक। Curious तो indeed. कंफ्यूजन हो जाएगा। यू विलो, विलो सोच रहा हूँ मैं, विलो के बैंड भी बनते हैं ना अपने, इंग्लिश विलो। हाँ मेरे को पता है। रेड ओक, रेडवुड, चेस्टनट, पियर, पाइन, मैपल, लॉरेल, लार्ज, हॉली, हेजल, हॉथॉर्न, फर, इंग्लिश ओक, एल्म, एल्डर, इबनी, डॉगवुड। अच्छा, How intriguing. एल्डर मतलब सबसे बड़ा, एल्डर ट्री मतलब उसका रहता है वोल्डेमॉर्ट, और उसका क्या नाम है वो बुड्ढे का डम्बलडोर, ये दो ही लोग का रहता है एल्डर, एल्डर पेड़ से बनता है। ओ भाई 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 सही। और हैरी पॉटर की छड़ी कौन सी थी पता है क्या? हैरी पॉटर की वही फिनिक्स फेदर वाली रहती है, उसकी तो मतलब कौन सा मेरे को याद नहीं। एप्पल, एल, अबे एल्डर भी दो एल्डर है, ए एल डी ईयर और एक ई एल डी ईयर, कौन सी बोल रहा है तू? ई एल डी ईयर वाला है, ईयर वाला एल्डर वाला है, बुड्ढा वाला ना, चल यही रख लेता हूँ। Curious indeed. लेंथ में छोटी रखूँ लंबी रखूँ, सबसे लंबी के बीच में कुछ रखूँ? मीडियम में रख ज्यादा लंबा मुझे चाहिए। 12.5 इंच, 13 इंचेस कर देता हूँ, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी बताना जरा, क्या सही रहेगा, मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल, क्वाइट फ्लेक्सिबल, स्विशी। भाई यार इन लोग ऐसे इतने ऑप्शंस क्यों देते हैं भाई, इतना कैसे बताऊंगा मैं, तो देखा भी नहीं हो मैं मूवी। फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मत रख उसमें, वुड में थोड़ा रिजिड रहेगा, ज्यादा फ्लेक्सिबल मत रखना। वीपी रख लो, वीपी। Curious indeed. जितना फ्लेक्सिबल रहेगा क्या होगा? मतलब वो रहेगा ना, मतलब कानून टाइप का रहेगा, मुड़ेगा मारेगा, पता नहीं मेरे को क्या आइडिया। मैं अभी तक जितना भी देखो उसको किसी का तो फ्लेक्सिबल वो रॉड है तो मैं कभी देखा नहीं, सारे का वो चीज रिजिड नहीं रहता है। अच्छा भाई, इसमें तो फ्लेक्सिबल के अलावा भी अनयील्डिंग, यील्डिंग, इतने सारी चीजें हैं कि गांडी फट रही, मैं तो स्ट्रेस में आ गया भाई, कैसे करूँ मैं वीपी कर रहा हूँ, वीपी। How intriguing. पता नहीं उसका मतलब क्या है, ठीक है। और बैंड स्टाइल बता जरा, इसमें ना भाई साहब इसमें मैच उधर ही है, सॉफ्ट, स्पाइरल, पूरा स्पाइरल, या फिर नॉच्ड, इतने अलग अलग थे। तो स्ट्रीम में आएगा क्या? स्ट्रीम में आएगा क्या? गाना हो गया? How intriguing. डिस्कॉर्ड में आना, देख के बताना, या फिर यूट्यूब में देख, पता कैसे करना है। हाँ दिख रहा है, देखता हूँ बता रहा हूँ। हाँ यूट्यूब में है। Curious indeed. चल डिस्कॉर्ड में। कलर तो भाई मेरे को पक्का मैं ब्लैक लूंगा, कलर तो How intriguing. ब्लैक रहेगा। अच्छा इसमें ब्लैक, ये सोच रहा हूँ मैं, फाइनलाइज्ड बॉन्ड। अच्छा फाइनल वुड टाइप, एल्डर, फिनिक्स फेदर, टीवी, विली, बैंड स्टाइल। हेलो हेलो। हाँ हाँ भाई ये देखिए, ये 3 ऑप्शन दिया मुझे,
तो नीचे तो डिस्क्रिप्शन लिखा है, अनपढ़ का मार, नीचे क्या लिखा है? इसमें तो केवल यही लिखा है, इसमें कुछ इसमें ग्रेट कुछ रेंज ऑफ मैजिक, लेफ्ट वाले में जा। अच्छा प्रोड्यूसिंग कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट मैजिक, पावरफुल। पावरफुल मैजिक। अच्छा मतलब ये पावर रहेगा, ये कंटिन्यूअस रहेगा, ये अलग अलग रेंज रहेगा। ये रेंज ही रहेगा, तू देख ले। पावर ले लो। हाँ ले ले, ड्रैगन ले ले, फिर मैं वही तो बोला ना तेरे को। लेकिन ड्रैगन कैसे हो रहा है समझ नहीं आ रहा, ड्रैगन वाला तो मेरे को याद नहीं आ रहा किसका होता है वॉन्ड में ड्रैगन। ले ले ड्रैगन ही ले ले, पावर बोल रहा है तो। बट इसमें रेंज भी तो बोल रहा है, रेंज ले लेता हूँ भाई। हाँ तो तू फिनिक्स ले ले फिर, मैं तो बोल ही रहा था फिनिक्स ले ले कर। ये देख यहाँ पे वुड टाइप लिखा है, कुछ नहीं लिखा है किसी के बारे में। ये एल्डर बोल रहा है ना तू? हाँ ये वाला एडिटर बोल रहा हूँ। और देख फ्लेक्सिबिलिटी, ये रखा हुआ है बीपी। How intriguing. ठीक है, और वैंड स्टाइल बोल रहा हूँ मैं। ये देखिए इस तरीके की है, इस तरीके की है। अरे चूतिया, ये कैसे दिखेगा वो है, ये कैसा भी रख ले इसको। ये वाली देख, और आगे जा, पीछे पीछे ये वाली, लास्ट थर्ड राइट से। हाँ ये वाली। चल भाई, ये तो वो है भाई, ये तो डिल्डो है। How intriguing. हाँ ये वाली रख लेना तो। ये मस्त है। राइट वाली देख ना, राइट में ये वाली। हाँ नहीं ये नहीं, ये भी अच्छी नहीं लग रही। ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग हाँ रही तो है। ये रख ले। ये बहुत न्यू, ये मस्त लग रही है। हाँ तो ये भी रख ले। अबे ये 1 2 3 4, ये चारों में से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे को सभी अच्छी लग जा रही है। हाँ तो तू कुछ भी रख लेना, तेरा इच्छा है। ये स्टाइल है, ये कुछ नहीं है इसमें, कैसा भी रख सकते हो। उसमें तू कलर वलर अपने सब सेट करके तू ले सकता है। मैं करिया कलर लेगा। हाँ ये ले लूँगा, ये ले लूँगा। आ रहा हूँ 1 मिनट। How intriguing. ये भी नहीं लूँगा, यही ले लेता हूँ, ब्लैक कलर है। ठीक है हाँ। 13 इंचेस बीपी। कंसिस्टेंट मैजिक तो नहीं चाहिए मुझको, कंसिस्टेंट रख लूँ। पावर मैजिक, रेंज ऑफ मैजिक। रेंज मतलब क्या रहेगा? रेंज तो देखते हैं यार, थोड़ा सा अलग। What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly... And the bond between you and your wand... Do not be surprised at your new wand's ability. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. ये क्यों एक्स दे रहा है? बता क्या है? Behave, damn you भाई, मैंने तो भी ये भी किया है। मैंने क्या गलत किया है यार? वाओ मस्त क्लोक मिलेगा। अभी क्लोक मैंने कहा, रुक जाओ। क्लोक है इन्वेंटरी में, नहीं कहाँ पे था? मुल्ला टोपा नहीं पहनना भाई मेरे को, ये अच्छा लग रहा। नाइस कूल। ये क्या है? ये अच्छा है। नाइस नाइस नाइस। इसमें शायद अच्छा लगे इसका। फिर वही बात, नहीं ये नहीं, ये अच्छा। इसमें कुछ नया मिला या नहीं मिला? इसको नहीं रखा तो अच्छा है। चलते हैं पिपिन्स के पास। पहले पिपिन्स के पास जाने का मन हो रहा है। ये रहा पिपिन्स। चलो है ना, आप रास्ता देखा, यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा है। बढ़िया वॉन्ड है, वॉन्ड आउट। ये कौन सी चल रही है गाँव को? तो टॉय शॉप लग रही है, मैजिक टॉयज।
वहाँ भी दिखी थी क्या? ये दूसरी मिल रही है बस पेट करने का ऑप्शन। हाँ बस पेट करने का ऑप्शन दूसरी मिल रही है। Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she'd... Though, I don't believe I've seen your... It's my first time in Hogsmeade. Is it really? Well, Parry, you'll have read it on the sign, of course, but Grandfather Alt, how may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some rest... You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected it. Is it not the most fast... A potion's free. They may not be as sure... As it's your first time in, I also offer ready. But for now, let's get you those written. हीलिंग पोशन ले लेते हैं, जरूरत पड़ेगा 100%। ये क्या है? हेल्पिंग, ये ठीक है। Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. हाँ ठीक है, another time आते हैं भाई, another time आते हैं। नहीं, एक सेकंड, कुछ अच्छी चीज़ थी इसके पास, लाइट आरबी में। ये सब तो क्या है? सेल भी कर सकते हैं क्या? I see. इसको सेल कर रहा है, इसमें तो कुछ मिल गया, प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी कुछ मिल गया, इसको रखे रहना, इसमें कुछ नहीं। इसको सेल करें, ज़ीरो गाड़ी है, ये तो अपने पास है। बाय ब्रो। चलो ये क्या है? हाउस एम्बलम स्कार्फ, नाइस। ये भी एक चीज़ दे रहे हैं। तक कहाँ है? कल तो आ गया था। तुम भी बोलते हो? कुछ भी बोलते हो? हाँ, हेलो। हाँ। आई एम बैक। भाई क्या हुआ? ले लिया यार, बढ़िया गियर ले हाँ। रहा हूँ फिलहाल तो। गियर क्या है? क्या है गियर? कुछ दिख ही नहीं रहा है मेरे को तो। स्क्रीन दिख रही होगी ना भाई, स्क्रीन देखना। हाँ, स्क्रीन में तो दिख रहा है, मतलब क्या गियर है? ये कपड़े इसमें डिफेंस और ऑफेंस बढ़ रहा है। मुझे कुछ सेल कर देता हूँ, बाकी चीज काम की नहीं है। ये है ना, ये देखिए, ये सब बोल रहा हूँ। इनविजिबल क्लोक ओक मिला है क्या? नहीं तो वो भी होता है क्या? होता है ना। अभी नहीं, फिर वो आगे मिलेगा मतलब टाइम से। अभी तो मैं हॉग्समीड में पहली बार आया हूँ। हॉग्समीड जानता है क्या तू? हॉग्समीड वो है, मार्केट है। हाँ बस मार्केट आया हूँ खरीदने। तो मैंने अभी पहली बॉन्ड बनाई है, अपने पोशंस लिए हैं, ठीक है। हाँ। कहाँ जाना है? और क्या है? टॉम्स एंड स्क्रोल्स जाना है, मैजिक नीप। टॉम्स एंड स्क्रोल्स जाना है। ओलिवेंडर है ना जो वॉन्ड, ओलिवेंडर को जानते हैं जो वॉन्ड बनाता था? हाँ। वहाँ गया था वॉन्ड बनाने में। हाँ तो वहीं तो मिलता है, और कहीं नहीं मिलेगा। अब क्या लेना है तेरे को? लिस्ट होगी ना तेरे पास कुछ लेने के लिए? हाँ देखना, लिखी है विजिट टॉम्स एंड स्क्रोल्स। वहाँ पे क्या मिलेगा देखना, वहीं जाना। द मैजिक विजिट मैजिक नीप। भाई मजा आ रहा है यार, मतलब चिल गेम है काफी बढ़िया। 3 स्पेल सीख लिया। इसलिए तो एक्यो। हाँ, चिल गेम ही खेल, थोड़ा तेरा माइंड भी फ्रेश हो गई। कि फाइटिंग खेल के ना सैचुरेट भी हो जाता है, दिमाग भी फटता है साला। यार चिल है, बढ़िया घूम रहा फिर रहा है, GTA टाइप ओपन वर्ल्ड, बढ़िया खेल। मैं भी चाह रहा हूँ, बस वूकॉन्ग चालू ही करूंगा साला। कर देखता हूँ क्या लेने जा रहा है तू। ये आ गया क्या अभी टॉम्स एंड स्क्रोल्स में? हाँ उसी से Pardon बात me, कर sir. रहा हूँ। I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might नाम be seeing रखना you था तो मैं soon. नाम रख लिया। I अमर am the इवेंजेलियन। proprietor here. इवेंजेलियन क्या सोच के रखा भाई? You've had a conjuring lesson then. एक एनीमे है I'm afraid I haven't yet, sir. कन्वर्टेड लग रहा है तू। But you will soon enough.
चुप लौड़ा। It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcraft. Stay the course, and you could soon. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. And I too see in it. But I shall let Professor Weasley a potting table and a potion station. Potting table? Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want. सोचिए potting table मतलब जिसमें रख के तू अपने पोशंस बनाता है। अच्छा भाई। पैसे कहाँ से आए तेरे पे? 0 पैसे में सब मिल जा रहा है। Feel free to take a look around at the rest of my inventory. ये 0 पैसे में वो चीज मिल रही है जो स्टोरी का पार्ट है। बाकी अच्छा, पैसे लगे हुए लेने में। अब भाई मैजिक नीव बचा है, ठीक है। ऊपर क्या है पहले देख के आता हूँ। ऊपर कुछ अच्छा दिख रहा है, देख के। देखो पता है इसका मैप इतना बड़ा है और इसमें कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी, कोई रोक नहीं। देख कुछ तो तू झाड़ू नहीं मिला तेरे को उड़ने के लिए? नहीं, अभी ब्लैक ने मना कर रखा है झाड़ू लेने से। ब्लैक ने सबको मना कर दिया, झाड़ू में नहीं हो सकता। बेटी चो दौड़ा रहा है इधर उधर साला। इसको देख के मेरे को वो गेम याद आ रही है, बुली। PS2 में आता था। सुनाओ बुली, सुनाओ। हाँ, वो भी ऐसे स्कूल में घूम के 3-5 करते रहता था बेटी चो। मैजिक नीप चाहिए, मैजिक नीप ये रहा। पाथ ऑफ एक्साइल 2 ये क्या आ रहा है नीचे मेरे? गेट रिवॉर्ड्स, पाथ ऑफ एक्साइल कि कुछ अच्छा ऐड है क्या? तो मैं कुछ रिपेरो और एक्यूरियो मिल गया भाई, और वो भी मिल गया, क्या नाम है? रिपेरो से तो रिपेयर होता है भाई। लेवियोसो भी मिल गया। अकीरो मेरे को याद नहीं आ रहा। एक्यूरो से खींचते हैं किसी भी चीज को। एक्यूरो खींचता है? हाँ, अपने साइड खींचना है तो एक्यूरो करते हैं। कुछ नहीं नीचे। अच्छा। और जाना साले नीचे क्यों कूदने मरने जा रहा है? मर जाएगा साले। लेवियोसो मिला है भाई, मस्त है। कुछ उड़ा देता है लोगों को। Well, hello there. लेवियोसा होगा बे। लेवियोसो है, लेवियोसो। Pardon me, sir. I'm here for the seeds. नहीं, गार्डियन लेवियोसा होता था जिससे उड़ता था। Oh, the dittany for the new 5th वो तो year. उड़ता था, I take it किसी that's और को you उड़ा then. देता है। Merlin's beard. Starting Hogwarts is a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. Well, bravo. Not everyone has the Name's Timothy Teasdale, by the way. I keep the cart out here because I like a good... I suppose not. In addition to seeds, I have... But what's it? चलो भाई, सीड पैकेट्स उठा ले भाई के यहाँ से। Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Natty. इसके अंदर नहीं जा सकते क्या? लॉक करके। अब नेटी के पास जाने बोला, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ टाउन। नेटी में को वापस ले जाएगी। कर ले, कुछ मिलता है कैसे घूमने फिरने से? कहीं कुछ पड़ा हुआ है? हाँ, ये देख बहुत मिलता है भाई इसमें। ये वीडियो करता हूँ। Revelio. Lumos. नहीं खुलेगा ऐसे। Leviosa. उसका अलग स्पेल आता है। इनका स्पेल ये आया नहीं होगा तेरे पास तो खुलेगा भी नहीं। Leviosa. यार इसको खोलना है मेरे को। Preparo. अरे तो चोदी के तो उसको खोलने का तेरे पास रहेगा ही नहीं, कैसे खोल लेगा? नहीं खोल सकते। नहीं, आलो अमोरा करके एक आता है, उससे खुलता है। अच्छा, देखिए लेवियोसो है। हाँ, लेवियोसो से ही उड़ रहा है ना, ये वैसे ही उड़ा देता है लेवियोसो से। मैं तो बोल तो रहा हूँ लेवियोसा से उड़ता है करके चोदी। आलो अमोरा करके आएगा स्पेल, उससे तेरा लॉक खुलेगा सब। ठीक है, अभी चलते हैं फिर यहाँ से। एलियो मोरा जब तक मिलेगा, अभी टीचिंग करेगा, मेरे को सिखाएगा वो। मेरा जो वो है ना, क्या नाम है, रॉनेन है मेरे मास्टर, वो बढ़िया सिखाते हैं, वही सिखाएंगे। रॉनेन सर से सीखूंगा बाद में। अबे ए मिल गई, ये नाइस। क्या है ये? अरे गाइड बुक के पेजेस उड़ रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो इकट्ठा कर लेता हूँ जहाँ दिखते हैं तो। कहीं आया तो और भी दुकानें खोलो। लेवल 2 लॉक।
अरे लेवल 1 है अभी तक मेरा यार, लेवल 2 में नहीं पहुंचा। ये तू एपिक में लिया है, ये वही गेम है कि तू टॉरेंट किया है इसको? एपिक वाला है भाई, टॉरेंट क्यों करूंगा, फ्री में मिल रहा है। अच्छा मैं नेट पे देखा है, लोग बोल रहे हैं कि इसका मैप बहुत बड़ा है और हर जगह जा सकते हैं, हर जगह। बट यार हैरी पॉटर को रखता तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, कैरेक्टर कोई दूसरा है साला। कैरेक्टर आप अपने ये तो बिल्ड किया कैरेक्टर की ऐसे ही दिखता था ये। नहीं बिल्ड कर सकते हो आप। तो ये बाल वाल तू अपने हिसाब से रखा है? हाँ बढ़िया। मैं नेट पे देखा तो बाद में पता चला कि रेवनक्लॉ जो है ना, सबसे कम मिशंस उसी में ही है। रेवनक्लॉ में सबसे ज्यादा मिशंस ग्रिफिंडोर में, सबसे कम मिशंस मैं बोल रहा हूँ ग्रिफिंडोर है, फिर स्लिदरिन है, बाकी उसके बाद है। साले सब तो बताता हूँ, चूतिया टाइप का बात कर, सुनता नहीं है मेरा बात। सुनो भाई, मैं कहाँ बोला तुझे बताया, मैं तो बोल रहा हूँ सबसे गेम में मिशंस बोल रहा हूँ। हाँ तो वही ना, जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्लब, वो उसमें तो मिशन कम ही रहेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। ये देख एक और है लूमस। एक पजल क्या कर रहा है, इतना रोशनी है उसमें, लूमस कर रहा है। भाई ग्लव्स मिल गया, नाइस। गियर में ग्लव्स पहनो, ऐसे ही घूम घूम कर सब इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर जाऊंगा उसके पास। ऑफेंस बढ़ गया भाई, वाओ कुछ मिला गया। और इकट्ठा करता है यार। ये क्या है? बढ़िया लड़की लेके नंगटी घुमाता ना, बे मजा आता। हाँ भाई यार, असली लड़की नंगी देख लिया हूँ तो अब इसमें क्या ही नंगी लगती। वाह यार, एक फ्री में मेरे को वो हीलिंग मिल गई भाई। इतनी बिल्लियां हैं यहाँ पे, बिल्लियां क्या बोल रही हैं? एक्स दबा। अबे वो पेट करता है, एक्स कर दो आगे कुछ फायदा नहीं, पेट करेगा। अभी जो किया था दोबारा वही होगा। काफी बिल्ली है, क्या कुत्ते नहीं रहते क्या? बिल्ली रहती क्या हैरी पॉटर में? हर तरह के जानवर है इसमें। अच्छा। मेंढक, चूहा, बिल्ली। तेरी प्रजाति भी है क्या? तेरी माँ की प्रजाति क्या है ना। फोकट का चाय पी लिया भाई, पैसा भी नहीं दिया। मादर से क्या आदमी है भाई, और फल भी खा लेगा भाई। क्या है भाई हरामखोर भाई। सही है भाई, अबे सब चीज फ्री में। अब वो लॉकर में जाके क्या कर रहा था तू? लॉकर में क्यों लेके गया था तेरे को? कौन से लॉकर में? अरे जहाँ बंद कर दिया था, बोल रहा था दोपहर में खेल रहा था जब। अबे हाँ भाई, लॉकर पता नहीं क्यों लेके गया था मेरे को कुछ। अब लेकिन वो मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है। हुआ क्या था कि हम लोग जब खेल रहे थे ना, तो मैं अपने प्रोफेसर के साथ था। हम लोग जा रहे थे, यहाँ हॉगवर्ट्स आ रहे थे, तो रास्ते में ड्रैगन अटैक मार दिया। ये क्या हो गया? अभी रुको एक सेकंड, ये क्या नहीं, क्यों नहीं दे रहा है? लेवल 5 चाहिए इसके लिए। एक सेकंड रुक जाओ, ये क्या लिखा है इसमें? लेवल्स नहीं, ये तो नहीं है। नहीं क्या है भाई, देना चाहिए। अबे चोदी क्या, तेरा ऑफेंस 16 है, डिफेंस 5 है। डिफेंस 6 जब होगा तब खुलेगा वो चोदू। नहीं चूतिया, डिफेंस नहीं होगा, ये 6 डिफेंस प्लस करता है तेरी दाई का। 6 डिफेंस प्लस करेगा। ये खरीदेगा कैसे लेकिन? 60 रुपीस। तेरे पे पैसे कितने हैं? मेरे पास बहुत पैसे, 400 रुपए उससे ऊपर है। हाँ तो फिर ये कैसे नहीं खरीद रहा है? पता नहीं, पता लगा क्या करते रहता है। खरीद ये पहन क्यों नहीं रहा है? अरे पहना हुआ है लग रहा है, इसलिए नहीं पहन रहा है क्या? नहीं तो शायद लेवल 5 करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ तेरा कौन सा लेवल चल रहा है? दिख ही नहीं रहा मेरे को। अच्छा 4 में है। ओके ओके, 4 में। तो क्या हुआ था ना, हम लोग पहले जा रहे थे, रास्ते में अटैक किया कोई ड्रैगन, तो हम लोग गिर गए। एक ग्रुप दूसरा कॉल आ रहा है, एक सेकंड। तो हम लोग कहीं गिर गए, तो हम लोग को फिर कुछ की ढूंढने बोला प्रोफेसर। तो की ढूंढ रहे थे, दूसरे में को 3-4 स्पेल सिखा दी उसी समय। 2 स्पेल सिखाई थी। उसके बाद हुआ ये कि हम लोग को क्या बोलते हैं, एक मैजिक वॉल मिली, एन्चेंटेशन। तो मैं मैजिक वॉल पर तो खोला ना खोले, उसके बाद उसको जब मैं रिवील किया, उसके बाद उसको तोड़ा, तो उसके अक्रॉस में एक तो चेंबर दिखा। तो हम चेंबर में गए, फिर वो बैंक था एक्चुअली। तो बैंक में गॉब्लिन बैठा था रिसेप्शन में। रिसेप्शन से बात की तो गॉब्लिन देख के बोलता है
यार आप तो लेवल 12 के वॉल्ट वाले लग रहे हो। ठीक है चलो मैं आपको छोड़ के आता हूँ। तो हम लोग बोले ठीक है, हमको भी पता तो कुछ था ही नहीं। अब हमको लग रहा था कि हमको कहीं जाना है, इसको पता है, हमें तो नहीं पता। तो हमें लेके गया लेवल 12 वाले वॉल्ट में, फिर वहाँ पे बंद कर दिया हमें। भाई 54 पैसे मिल गए। वाओ। तो जब वो बंद कर दिया उसके बाद वहाँ पे भाई हम लोग घूमे। ठीक है फिर हम लोग को एकदम अंधेरा हो गया, फिर वहाँ पे अटैक हो गया हमारे ऊपर। नाइट्स लोग आके अटैक कर दिए, नाइट्स को मारा। वहाँ पे 2-3 स्पेल सीखा, प्रोटेगो ये वो। फिर नाइट्स को मारने के बाद हमारे पे अटैक। फिर जब हम नाइट्स को मार लिए उसके बाद ना वापिस आया वो क्या नाम है ये गॉब्लिन, और ऊपर से दूसरा कोई गॉब्लिन रैनरॉक नाम था, रैनरॉक कोई विलन टाइप से था। अटैक कर दिया भाई हम लोग के ऊपर, आके हमसे लड़ने लगा। तो ना एक सेंटर में एक बहुत बड़ा सा नाइट था, एकदम बड़ा सा नाइट। वो भाई वो बंदा क्या बोलते हैं वो हम लोग के प्रोटेक्शन में जिंदा हुआ। बट ये नाइट और वो एल्फ की लड़ाई होने लगी। वही क्या नाम है वो भी एक वो था गॉब्लिन था। लड़ाई में हुआ ऐसा कि भाई सब तबाही होने लगी। फिर एक पोर्टल खुला पीछे, मैं और प्रोफेसर पोर्टल से निकल गए कोई रूइंस साइड, कोई जंगल वंगल में चले गए। फिर उसके बाद जब जंगल में जाने के बाद इसने पूछा प्रोफेसर हम कहाँ आ गए, तो प्रोफेसर बोला ऐसा कैसे हो गया, हम यहाँ कैसे आ गए। फिर नेक्स्ट सीन में हॉगवर्ट्स में पहुंच चुके थे। बस तो अब ये बात है कि हमको पता नहीं कि क्या हुआ है। और हम लोग ये जो बीच में हम लोग जो एडवेंचर किए हैं ना, और वहाँ पे मैं 2-3 स्पेल सीखा हूँ, ये सब चीज़ हम लोग को छुपा के रखना है, हॉगवर्ट्स में किसी को बताना नहीं है। तो प्रोफेसर ने भी मना किया है, क्योंकि अभी जो भी कंपटीशन होता है ना मेरा, मतलब मेरे को सिखाते हैं तो बैटल करवाते हैं दूसरे लोगों से, मैं बहुत जीत जाता हूँ। तो फिर लोग पूछने लग जाते हैं भाई कि तुमने सीखा है भाई, तुम तो 1v, कोई बोलता है कि तुम ऐसे जाओ इंडिपेंडेंट असैसिनेशन वाली ऑर्ग में जाओ, तुम्हारे वेंट्स पावरफुल है, बहुत स्किल है ये वो। फिर कोई प्रोफेसर्स पूछते हैं कि तुमको इतना अच्छे से कैसे आता है, बट फिर भी कभी भी प्रैक्टिस मत छोड़ना, ऐसे से बताओ। तो बताना नहीं रहता है भाई, उस समय बचाना पड़ता है, कैसे झूठ बोल के, या फिर बहुत डिफिकल्टी हो जाती है भाई उस टाइम। ऐसे डिप्लोमेटिक खेलना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि आपको वो प्रोफेसर ने क्या बताया, उस हिसाब से फिर मुझे भी आंसर करना पड़ता है। तो आंसर का ऑप्शन आता है क्या वो क्लिक करने का? ऑप्शन आता है ना भाई। तो जब पूछता हूँ पहले मैं प्रोफेसर क्या बोला आपको, उस हिसाब से आंसर करता हूँ। कई बार नहीं आता है तो फिर कुछ बोलो भाई, बहुत स्ट्रेस हो जाता है तब। तो वो छुपा के रखना। तो फिर प्रोफेसर से इसकी जब बात होती है, पहले प्रोफेसर से फिर बात करता है, तो फिर पता चलता है कि भाई प्रोफेसर अभी तक कुछ फाइनल, अभी तक उसको पूरा 100% ना वो नहीं कर पाए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। तो प्रोफेसर बोल रखा है अभी मेरे को कि भाई अभी रुक जाओ, है ना, अभी रुक जाओ, मतलब अभी पूरा उसको हम लोग को वो करने दो, उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा, ऐसा बोला। भाई ब्लैक मिल्क का नया पार्ट आ रहा है। आप पता है भाई, ज़ॉम्बी पता है भाई। एक्चुअली ना उसका DLC आने वाला था, लेकिन हुआ ये कि मतलब सब लोग DLC के लिए ही बोले थे, क्योंकि कोई भी आती है ना तो पहले DLC निकालते हैं। लेकिन ना तो CTO भी ना DLC पे फोकस किया, मतलब जो उसका फाउंडर है ना, उसका मैसेज आया था, उसका एक तो उसमें वो था क्या नाम है, पोस्ट था उसका, मैंने पढ़ा है रेडिट पे। तो उसने बोला कि हम DLC के लिए वर्क कर रहे थे, मेरे को इतना अच्छा गेम बनाया हमने, मतलब अच्छा गेम नहीं बोला उसने, बोला कि मैं जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा बड़ा गेम बन चुका है। मेरे को तो बहुत स्ट्रेस होता है, मैं रोता हूँ, मुझे बहुत गिल्ट होता है, ये होता है, क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशन है DLC की, हम उस पर खड़े हो पाएंगे कि नहीं, ऐसा वैसा जितना मैं सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा हम लोग कमा चुके हैं। तो ऐसा बोलता है। फिर बोलता है कि ऐसा हम लोग DLC के लिए वर्क कर रहे थे, फिर एक दिन अचानक से एक एम्प्लॉय का मैसेज आया कि वाना मेक समथिंग न्यू, एंटायरली न्यू गेम। तो फिर वो डिस्कस हुआ, तो फिर इन लोगों ने पूरा ही नया गेम पे फोकस कर दिया ज़ॉम्बी। क्योंकि मेन रीजन ये था कि DLC जितना बुकॉम में एक्सपेक्टेशन हो गया, मोस्टली DLC में ये लोग वो कवर नहीं कर पाते, तो फिर थोड़ी वो हो जाती, बदनामी हो जाती। इस वजह से ज़ॉम्बी पे पहले फोकस कर रहे हैं, अब DLC बाद में बनाएंगे, पहले ज़ॉम्बी बना रहे हैं यार। लेकिन मेरे को एक चीज़ अच्छी नहीं लगती यार, इन लोग अपना चाइनीज़ कल्चर क्यों दिखा रहे हैं इसमें। जापान वाले एल्डन रिंग बनाए, लेकिन वो लोग अपना कल्चर नहीं दिखाए भाई। जापान के एल्डन रिंग को तेरे को पता है राइटर कौन है? जो बंदा ये लिखा है गेम ऑफ थ्रोन्स, उसको लिए थे वो लोग राइट करने के लिए। उसको इन लोग, मतलब एक तो मेन तो वो हिदेदाता मियाज़ाकी तो है ही है, लेकिन उसके अलावा ये भी है ये गेम ऑफ थ्रोन्स का राइटर, उसको बस इसलिए लिए थे भाई। उसको इन लोग क्या करते थे पता है तेरे को? उसको इन लोग ना ये ऐसे मॉन्स्टर्स की फोटो दिखवाते थे, वर्ल्ड बनवाते थे उससे। भाई तब जाके ऐसा गेम बना है जिसका कोई तोड़ नहीं है भाई। एल्डन रिंग को इतना खतरनाक लोर है, उसकी स्टोरी है, इतना अच्छा गेम इन्होंने बनाया है भाई। बेस्ट राइटर को लिया है इन्होंने। सोच रहा है लाइक सीरीज, गेम ऑफ थ्रोन सीरीज सबसे आज तक की टीवी की सबसे लंबी चलने वाली, टॉप में रहने वाली सीरीज है।
उसके राइटर को लिया है गेम को राइट करने के लिए। तो उसके मैं इंटरव्यू देखा तो उसके राइटर ने बोला कि मैंने कभी ऐसे वीडियो गेम्स खेला नहीं, ज़्यादा 1-2 बार खेला है, वो फाइट हो गई भाई। मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गया। और भाई एल्डन रिंग से अच्छा गेम मैंने देखा नहीं। मारता हूँ क्या हो गया? कैसे करते हैं? डील कैसे करते हैं? मारना पड़ेगा भाई इसको भी। हेलो हेलो। हाँ भाई। भाई बस Hogwarts खेल रहा था। Hogwarts लेगेसी मजा आ रहा है। I see what you meant about not being able to pick a favorite मुझे shop. Ravenclaw मिला है। We should walk around a bit Ravenclaw more. मिला। Perhaps today is the day I finally. क्या? मैं क्या कुछ बोल रहा हूँ? बॉन्ड बना दिया पहली बॉन्ड। Are we weakening him at all? Keep at it! We have to let him down! Leviosa! What was that? बॉन्ड बनाया, क्वेश्चन दिया वोटिंग करने के लिए। वोटिंग टेबल दिया हूँ, क्या कर रहा है? मैंने फिनिक्स फेदर की बॉन्ड बनाई, एल्डर वोट दिया है। Took him long enough. We need to make sure he stays that way.
Leviosa. मर गया भाई। एंशिएंट मैजिक इन्वोक कर दिया यार पहली बार अपनी वॉन्ड से। एनबी प्लस आरबी दबाने बोला, मैंने मार दिया। एक तो आर्मर्ड टाइटन अटैक कर दिया था। Goodness! A second troll! Did Armored you troll. two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad काफी to chill help. game है, मजा आ I'd रहा say है। help is a bit of an understatement. Nerve like that. घूम रहा हूँ, फिर The रहा हूँ, makings lessons of ले an रहा हूँ, aura, if मैजिक you सीख ask रहा हूँ, me. If you दोस्ती are कर रहा हूँ unharmed, रेवनक्लॉ के लोगों से, perhaps the मजा two आ of रहा you wouldn't mind helping me put a few things है। back बट ना to एक where they दिक्कत हो गई है, were. प्रोफेसर ब्लैक ने झाड़ू का यूज करना बैन कर दिया, उड़ Officer नहीं Singer. सकता। And thank you again. अब अभी कुछ समय के लिए बैन कर दिया यार उसने, साले हरामी ने। I like your pajamas. तो अभी स्टार्टिंग में शायद नहीं होगा। Accio. Reparo. अच्छा रिपेरो भी सीख गया हूँ ना मैं, तो रिपेयर कर देता हूँ। रिवीलियो भी सीख लिया मैंने और एक्यूरो सीख लिया। Lucky they didn't do more damage. क्या बहन के लोड़े। Reparo. हाँ बोल। अरे तेरे को नहीं बोल रहा हूँ। अरे एक दोस्त है ना डिस्कॉर्ड में खेलते रहते हैं हम लोग, देखिए वो कौन खेल रहा है, मैं ये खेल रहा हूँ, वो भी कौन खेल रहा है। One less thing for Officer Singer to worry about. वो गाली दे दिया फोन में किसी के साथ। भाई ये तो पूरा ही तोड़। Reparo. अरे भाई काफी बिल्ली है भाई, बिल्लियों को पेट कर लेता हूँ मैं तो, काफी बिल्ली हैं इसमें। और क्या रिपेयर करना है, 6 चीजें दिखा रही है, मैंने 7 चीजें दिखा रही है, 6 चीजें रिपेयर कर दी, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। उस साइड होगा आई गेस, तो गाइस है। I've always said that travel broadens the mind. Revelio. I think ये है। Reparo. नाइस हो गया रिपेयर हो गया। चलो अब 90 के पास वापस। नॉटी 90। तुम क्या कर रहे हो? We were just talking about you. अच्छा ओके ब्रो। Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did. भाई रोब मिल गया है बढ़िया वाला। Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? मेरे को फ्री में रोब दे रहा है कोई भाई। भाई ऑफेंस भी बढ़ रहा है इससे, ये रोब ले लेता हूँ भाई। गियर स्क्रीन भाई रोब मेरा ऑफेंस बढ़ गया भाई, मस्त रोब मिल गया। वो अपने आधार कार्ड पर पीछे वाला तूने नहीं भेजा क्या लगा? पीछे वाला क्यों चाहिए भाई उसको? वो वही तो इम्पोर्टेंट होता है।
आधार नंबर चाहिए, नेम चाहिए और एड्रेस भी चाहिए क्या वेरीफाई करने के लिए? मुझे मैं अपना पर्सनल एड्रेस क्यों उसको दूंगा? यहाँ बेंगलुरु में रहता हूँ। I suspect you have a sharp eye for fashion. What an extraordinary Shall we head to the three? Sounds like a good idea. Wonderful. Just. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Hello? Hello? Assuming it is not too busy, you might even meet Sirona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. मेरा दोस्त 3 बार देख लिया, बता रहा था पूरा कंप्लीट 2-3 बार। बन गया बॉटल में। It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. अच्छा ये वही वाली शॉप है जिसके सामने मैंने पढ़ा था ऑक्सफोर्ड की। ओके, कोई तशवीशियत शॉप है। Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you. I think that now might be a good time to head back to the castle. ब्रूमस्टिक्स लाइट की वजह कोई बाहर में बात करना था तो अंदर के लाइट से चलने को वाले। अरे यार मेरे को वहाँ पे जाना है यार, वो शेयर वाली जो जगह नाम क्या उसका, मेरे क्वेस्ट लाइन में इकट्ठा किया था उसको चेक कर। I'm certainly glad Sirona was there. And that she... I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. कॉमन रूम कहाँ है यार मेरा? कॉमन रूम कहाँ आ गया भाई यार? मेरा कॉमन रूम ही नहीं मिल रहा है। कॉमन रूम में ही तो रहते हैं ना हम लोग। कॉमन रूम यहाँ पे साउथ विंग यार, नहीं यार ऐसा नहीं है। कॉमन रूम ग्रेट हॉल, अबे कॉमन रूम तो है नहीं साढ़े वर्ल्ड में नहीं। फास्ट ट्रेवल टू योर कॉमन रूम। मर गया बहन का लौड़ा। कौन सायन लोग मर गया? आओ नाइस भाई। बोला था ना आज मार दूंगा बहन चोत को।
कहाँ है भाई? कॉमन रूम ही नहीं मिल रहा मेरे को, मैं कहाँ से जाऊँगा कॉमन रूम? लूम पर माउंटेन शेकिंग क्लॉ क्या क्या मिला वेंचो? ओहो ब्रेथ ऑफ फायर, भाई कहाँ है कॉमन रूम? बहन बहुत कॉमन कुछ रूम। मिल गया है। चलो चले अब यहाँ से। डेमी गाइस स्टैचू। अबे भाई यार ये तो चीटिंग है भाई। साउथ विंग में है क्या कॉमन रूम? मैं वहीं देखूं जरा टॉक्स में इन्वेंटरी। माउंटेन शेकिंग क्लॉ स्पेशल क्राफ्टिंग मटेरियल एक मशीन में अंदर जाने you cannot use Ravenclaw however the power to check mountains. Surface mountains and listing like the components. क्या नाम था मेरा? Discord. Significantly increases attack for the next unwilling strike in cross for short duration. वे कहाँ है भाई कॉमन रूम में? तो मैप बैक भी नहीं हो रहा है। रुक जा भाई। हेलो अभी मेरे को फास्ट ट्रैवल करने बोला कॉमन रूम में, और कॉमन रूम तो मैप में दिखाई नहीं रहा और मैप बैक भी नहीं हो रहा यार। मैं क्या करूं? अटक गया हूँ। फास्ट ट्रैवल करने बोला कॉमन रूम में मैप नहीं दिखा, क्या बोल रहा है यार? मतलब ना कॉमन रूम अभी रेवनक्लॉ कॉमन रूम ठीक है, वो अभी आया भाई। ढूंढते ढूंढते हालत खराब हो गई थी पूरे मैप में। एक्चुअली ना मेरे को हॉगवर्ट्स का मैप खोला, उसके बाद उसने बोला कि कॉमन रूम में टेलीपोर्ट कर लो, तो मैं कॉमन रूम ढूंढा। उसमें 7 झंडे थे, किसी में कॉमन रूम नहीं लिखा था। मैं फिर मैं घूमते घूमते हर जगह क्लिक करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर एक सेंटर में एक दूसरा सा काफी समय बाद मिला, तो फिर मेरे को कर पाया भाई। अबे तो मैप ढूंढना अच्छे से मिल जाएगा भाई। सुन ना, ये ब्रेथ ऑफ फायर सोक जो है ये कुछ काम आता है क्या ढंग का? बता क्या लिखा है उसमें, मैं बताता हूँ। Using the god significantly increase attack for next unveiling strike in cloud step for short duration. बहुत अच्छा है भाई। वो क्लाउड स्ट्राइक का अटैक बहुत अच्छा इंक्रीज करता है डैमेज। तो इसको मैं रख लूं फिर टर्टल टियर के साथ? तेरी गांड का बम्बू रख लेना भोसड़ी के। ठीक है फिर वो जाता हूँ उसमें रख लेता भाई। वो बहुत अच्छा है। अगर तू अनवेलिंग स्ट्राइक यूज करता है ना गायब होने वाला, तो बहुत अच्छा है। हाँ करता हूँ भाई बहुत अच्छा है। फिर वो लेजेंडरी, वैसे भी उसका लेजेंडरी टियर है, देख उसमें लिखा होगा। लेजेंडरी टियर का तो नहीं मालूम मेरे को। हाँ देख उसके नीचे, जब तू सोक्स खोलेगा तो उसके नीचे में कलर होगा येलो कलर, लेजेंडरी कलर है वो। रेयर है भाई, लेजेंडरी नहीं है। नहीं यार ये वाला नहीं एपिक, सॉरी एपिक है, एपिक है। वही एपिक है, वही मैं बोल रहा हूँ भाई। मेरे को पता। तो भाई इसको किस में रखूं? लॉरेल बर्ड्स में रखूं क्या? यूजिंग द गॉड मॉडरेटली इंक्रीज डैमेज रिडक्शन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ये इसके जगह में इसको रख लूं क्या? अनवीलिंग स्ट्राइक इन क्लाउड। रख ले भाई, रख लिया बैंडी फुदी। अब मैं जा रहा हूँ। मेरा भाई स्किल पॉइंट मिले क्या यार? भाई मजा आ गया भाई। अबे अब शायद ना हम लोग जहाँ पे वो उस टाइम नहीं ड्रैगन अटैक नहीं किया था बे हम लोगों को, वो गॉब्लिन के पास जाना पड़ गया था। तो शायद ना प्रोफेसर मेरे को बोला है फिग की, पता चला है कुछ डिस्कवरी किया, उसी के पास जा रहा हूँ उससे बात करने। बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, देखते हैं क्या बताता है फिग। कुछ तो डिस्कवर किया है वो उस बारे में। भाई कोई एन्चांटमेंट किया था वहाँ पर, वो एन्चांटमेंट कौन किया समझ नहीं आ रहा। डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स टावर। ओके अबे तू कहाँ पे देखा था बे पॉटर, हैरी पॉटर? टीवी में। तेरी दाई का साले पूरा कहाँ देखा था भोसड़ी के? पूरा तो पूरा टीवी में देखा होगा तू, स्टार्टिंग से एंड। टीवी में तो भाई बीच बीच की मूवी आती थी, वो तो मैं भी देखा हूँ। टीवी में नहीं,
पोगो में देता था पहले, हर संडे नया मूवी आता था हैरी पॉटर का, 5वां 6वां पार्ट तक, जब तक 5वां 6वां आया था। उसके बाद जब लास्ट पार्ट आए तब पूरा देता है, अभी भी देते रहता है। हालांकि किसमें देखा हूँ मैं, अभी तू देखेगा तो नेटफ्लिक्स में कुछ मिल जाएंगे, कुछ तेरे को अमेजोन में मिल जाएंगे, छोड़ भाई और मोस्टली तो उसमें है, क्या बोलते हैं अपना, डिज्नी प्लस हॉटस्टार में है ना, उसमें सारा हैरी पॉटर है मेरे हिसाब से। नहीं मैं टॉरेंट कर लेगा। मैं ऑनलाइन वेबसाइट है ना जो उसमें देख लूंगा, बहुत सारी हाँ वेबसाइट्स। नहीं ऑनलाइन तो बहुत मिल जाएगा। मैं तेरे को साइट, अगर तेरे को देखना है तो तू ऑनलाइन चेक कर सकता है। बाकी तेरे को वो बता दिया मैं, क्या बोलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल, वो क्या बोलते हैं उसको, ओटीटी। ठीक है। जाता हूँ वेब्रिज में, एस्टेट ऑफ जू। कहाँ जा रहा है तू? ये चैप्टर वही मकड़ी वाली जगह। अच्छा Professor, मार तो दिया, I'm glad to see मार you. इस लूंग को मार दिया। अब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब तक थोड़ा लेवल बढ़ेगा तो बाकी लूंग, और वो बेंचोद गेंट टाइगर को पेलूंगा जाके। Sir, the trolls were wearing armor. अच्छा है भी, गेंट टाइगर It लेने had लायक that है। dark glow like the dragon collar. Goblin silver. हाँ, वो एक एक्स्ट्रा क्यूरियो का स्लॉट ओपन करता है, वही बहुत अच्छा काम करता है वो। And why send trolls बाकी too? कुछ नहीं। They were there because of me. करना I पड़ेगा। overheard Ranrock talking क्यूरियो to का एक स्लॉट और मिल जाएगा तेरे को, वो है ना तेरे को 3 Was in Hogsmeade with Rookwood. 3 है ऑलरेडी मेरे पे, 4 हो जाएगा शायद। so that Rookwood could get to me. And he would have. हाँ had सॉरी Serona and दो the होते patrons and सॉरी। the 3 broomsticks not intervened. This is great news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are नया after वो you, मिला they है want what we found in that यहाँ पे vault. आर्मर सेट, बट भोसड़ी का पाई। हाँ नाम बताना। अरे वेब वाला खुलता है चैप्टर तो उसमें एक नया नहीं मिलता, वही है शायद। Do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. अरे Gringotts रुकना लौड़ा, goblins aren't ओपन होगा तो typically the बताऊंगा ना। friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. तो ग्रिंगलॉक के said you गॉब्लिन्स discovered को जानते something हैं? in it. ग्रिंगॉट गॉब्लिन्स? Yes. हाँ बैंक के ही I है। discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise. नाम बताएगा तो एक दो लोग का याद अगर होगा तो बता पाऊंगा, हालांकि इसमें तो कैरेक्टर चेंज लग रहे हैं सारे। I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at I'd like you to work with Professor Heckert a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we are only after a book, but we should. Once you've honed your defensive. अब एक बात बता, हॉगवर्ट्स की लाइब्रेरी जाना अलाउड नहीं रहता क्या? एक सर्टेन सेक्शन में नहीं जा सकते, बाकी जा सकते हो। तो यार यही प्रोफेसर फिक बोल रहा है कि वो डेंजरस सेक्शन है भाई, वहाँ जाना ऐसे इजी डेंजर है बोल रहा है। जो तो लाइब्रेरी जाना कब से डेंजरस हो गया? ऐसा ही एल्डन रिंग में होता है, लाइब्रेरी जाना डेंजरस होता है, अलाउड नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत पुरानी हिस्ट्री की छुपाई हुई बातें रहती हैं। तो तू चले जाना, फिर भी क्या दिक्कत है? हाँ मतलब नेक्स्ट जहाँ पे है अलाउ, मैं तो चला जाऊँगा, बट नेक्स्ट क्वेस्ट है, पहले वो करना पड़ेगा। पहले प्रोफेसर हिकैट के पास जाना है, उसके बाद में प्रोफेसर के साथ ही जाएंगे, हम दोनों का प्लान है जाने का। कुछ उड़ रहा है तो बताओ, उड़ रहा है तो बताओ, कुछ उड़ रहा है तो बताओ। Some kind soul help me. ज़ोबियाना नोके को Are you help all करता right? Don't you know who I am? I don't know. Zenobia Noak. The girl whom अरे everyone at बेटी school तो hates for no बंदर reason. भाई ये सुअर। बंदा ना हमेशा ऐसी Everyone लड़कियों hates से you. बात करता है जिसको कोई पसंद नहीं करता। Because Hogwarts is full of Good bullies idea, and bhai. spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst. That no... My gobstone collection, that is. Are you familiar with gobstone? Gobstones? People can be so cruel. Imelda is... And now those... It's a nice strain here, kid. Rather an overreaction. I'll say. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone... Haven't you any friends at school?
Not really. Natty said hello once. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high, I'll see what I can do. I'd appreciate the help. शाफ्ट खुल गया If मेरे you में. do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake. क्या खुल गया? स्पाइक शाफ्ट. स्पाइक शाफ्ट. नाइस नाइस नाइस. उसका डैमेज अच्छा है. पर डैमेज अच्छा है बट मादर टू क्रिटिकल हिट चांस पूरा 6% से कम कर दे रहा है. मतलब 50% कम कर दे रहा है. मतलब मेरा 13% क्रिटिकल हिट चांस है. वो बहनचोद 6% कम हो जाएगा बट मेरा माना 30% और अटैक 10% बढ़ जाएगा इसको लेने से. वो तो है. कैंजिंग स्टाफ से ये डिफरेंस है उसका. कैंजिंग अच्छी लगी थी. मैं तो कैंजिंग से खेल रहा था. Revelio. कैंजिंग तो अच्छी है भाई. मैं भी थोड़ा इसके साथ थोड़ा हाथ बैठ गया है मेरा. अबे यार इसके गॉबस्टोन्स ढूंढने होते. तो गॉबस्टोन्स जानता है? गॉबस्टोन्स. नहीं वो नहीं. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly saw all the fuss अभी about. ऐसी लड़कियों से बात करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, जिनको कोई पसंद ही नहीं करता. पहली लड़की थी जो गंदे तरीके से रहती थी. तो अभी ये जो लड़की है ये गॉबस्टोन्स करती है तो कोई लोग पसंद नहीं करता. ऐसी लड़की से तो ये बातें करता है. चूतिया. You're in your night clothes. चिल रेजिस्टेंस. चिल वाली एरिया तो है. चलो ठीक हो जाने दो. एक गॉबस्टोन मिल गया. एक है भाई आगे. भाई ये हुबड़ी स्नोस में तू क्या रखा था रेलिक में? क्या? हुबरिस में तू क्या रखा था? रुक जा तेरे को फोटो खींच के भेजता हूँ. क्या रखा था बताना मुझे. ये वाला जो है इसमें तू कौन सा चूज करके रखा है? नाम बता. हुबरी स्नोस बता तो रहा हूँ लौड़े. नहीं जानता ये क्या चीज है. फोटो भेज दे. ये रेलिक. अच्छा रेलिक है. भेजा हूँ देख. इसमें क्या चूज करके रखा था? तू मेरा चूज ले. मैं तो लिंगरिंग अरोमा चूज करके रखा हूँ. मैं लिंगरिंग ही किया था. हाँ तो ठीक है. अबे तो अपने हिसाब से करना. इसमें मैं ऐसे क्यों पूछता है? ये सब तेरी बिल्ड के हिसाब से. देखो क्या लगता है क्या ज़्यादा तेरे चाहिए. मेरे को कुछ मिला ही नहीं अभी तक. अरे हाँ वो बताने वाला तेरे को. आर्मर बताने वाला था ना. हाँ रुक. भाई इसमें जो जो लिखा है वो सब तेरे को मिला है क्या नहीं मिला है? तेरे पास है ये सब चीज. स्पेल तू कास्ट करता है. सब चीज तो एक ये वाला मेरे को मिला है. गोल्डन मास्क फरी. गोल्डन एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट. हाँ बहुत अच्छा है. ये रख ले. लेजेंडरी है ये सब लेजेंडरी है. बेस्ट आर्मर है पूरे गेम का ही. बेस्ट है. रख ले. ये एंड तक भाई. इसी से मैं सबको मार रहा हूँ. वो कौन को मार रहा हूँ इसी से मार रहा हूँ मैं. लेजेंडरी से ही. इसको अपडेट भी नहीं किया था. शायद मिथिकल बनाया था शायद लास्ट में मारते समय. हाँ वो कौन को मारते समय मिथिकल बनाया था मैं. भाई इससे सबको मार रहा हूँ. ये सबसे बेस्ट है. इसको रख ले. अबे वो दो फाइन गोल्ड थ्रेड मेरे पे कम पड़ रहा है. नहीं तो पूरा बन जाता. मिल जाएगा आगे. फाइन गोल्ड थ्रेड मिलेगा तब बनाऊंगा इसको. अगर ये अच्छा है बोल रहा है तो मार के दूंगा इसी को. चलो फिर अंदर चलते हैं. नॉक. एस्टेट ऑफ ज़ू आ गया क्या? हाँ एस्टेट ऑफ ज़ू आ गया क्या? You up a little. हाँ वो कोई सुअर आया है दूसरा. हाँ वो तो मेरे को सुअर बना दिया मादर को. यहाँ पे एक गॉबस्टोन है. Revelio. Accio. यहाँ पे और भी गॉबस्टोन्स हैं. The feast is all set. Please come in. Be our guests. I'm most pleased to be included. भाई हॉगवर्ट्स में ग्रैंड स्टेयरकेस भी होती है क्या? बहुत बड़ी सी. हाँ वो हिलते रहता है बार बार. हाँ ओके. हिल रहा है बार बार. ऐसे मतलब क्या होता है कि पहले इसकी ऐसा होता है कि
स्टेयरकेस गायब हो जाती फिर आ जाती है, वैसी होती है ना? हाँ मतलब हिलते रहता है, एज इन मूव करते रहता है वो इधर उधर इधर उधर। ये तो भाई बनते जा रही है, मैं चलते जा रहा हूँ तो बनते जा रही है। अच्छा कभी बनती है, कभी गायब हो जाती है इस टाइप से। हाँ मैं चल रहा हूँ, ये बनते ही जा रही है, बीच बीच में गायब हो जाती है, बन जाती है। Not joining us again this time. Our lady अबे prefers not to भाई be तेरा seen इको आ रहा alone. है बहुत ज्यादा। But she's been thinking of you and sent this small token. वॉल्यूम कम कर She ले भाई, बहुत ज्यादा hopes your इको आ रहा है। lady will recover soon and pay her a visit up there. इतना ज्यादा कैसे आ रहा It's है a pity she didn't come. Or she would साउंड कम कर ले मेरा। enjoy a splendid show we've prepared for her. अरे वो तो ठीक है, लेकिन तेरा आवाज इतना ज्यादा। अच्छा अभी मैं आ रहा हूँ डायलॉग बाजी में। Gone and blood's been shed. I say, you two should take the floor. We're just servants, madam. What's the jest? I know you find your look embarrassing. Why hide from my mother with another pig face? यहाँ पे Old girl, don't you know I'm a pious Buddhist? Give me your mother's name, and I'll check my list. Heartless ass. After you ruined her house and her reputation, you're telling me you don't remember her? Reputation? Yaoguais care about reputation. All she cared about was lust. Now I know. You're one of her spiderlings. I'd better keep an eye on aren't high you? places around the school for Zenobia's gobstones. Well, your rudeness is forgiven. Show some respect. Maybe I'll kindly pay your mother a visit. Or not. I'm afraid that is not your fault. तो भाई ये तो एक लास्ट गॉबलस्टोन बचा है बस। मास्टर खुद मकड़ी छी। अरे मेरे क्यों काट रही है? अरे प्रोग्राम आई। यहाँ पे गॉबस्टोन होना चाहिए। कैलकुलेशन यहाँ पे वाओ ये कुछ मिले हैं ना इस पैसे अच्छे हैं। भाई इतना अंदर किसने छुपा दिया भाई इसके गॉबस्टोन? इतना बाहर इतना ऊपर कॉर्नर में। That is hardly appropriate school attire. भाई मेरे कपड़े अच्छे नहीं बोलती भाई, टीचर बोलती कि स्कूल का अटायर नहीं है तुम्हारा, चेंज करो। भाई ये तो गलत बात है। Second sister is dead. मार फोड़ना नहीं उसको। I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. चलो भाई अब ज़ेनोकिया के पास चलते हैं, उसको गॉबस्टोन रिटर्न करना है उसे। Still foot in its grave. And here you are, another monkey son. Your bullshit! Get your mother to beg for mercy, and maybe I'll spare your foolish life! Truth is, the thing you seek is right here in the hollow. Maybe now if you're too scared to come in. Destroy this rotten hole right now!
See where else you'd build your... मिला गोल्ड ट्री को रेट साला पीती I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. भाई इसके गॉब्स्टोन मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ? मैं gobstones. चूतिया हूँ क्या? मैं Really? ये भी झाटू है, लड़कियों के लिए I कुछ भी didn't करता think it रहता was है। possible. However, did you... Of course, they are yours after all. Oh, how wonderful. Now... That's a horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun, and now everyone knows the rule. Very well, off I go. Wish... चलो भाई, अब भाई बंद करते हैं, बोर हो गया थोड़ा मैं। बट इन्वेंटरी में कुछ नया चीज़ मिला है मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स चेक गाइस, क्या है ये? तो खाली है, ये क्या है? यहाँ पे एक नया वो मिला। ओनाई, प्रोफेसर ओनाई कौन है यार? मतलब बस मार्क्सू। अरे वाह, लेवल 5 हो गया भाई। नाइस नाइस नाइस। अब मैं अपनी गियर ओढ़ सकता हूँ। कौन से पहनेगा इसमें 8 होगा भाई। 8 डिफरेंस बढ़ रहा है भाई, इसी को पहनेंगे। नाइस भाई यार। वाओ, अबे बॉन्ड का हैंडल भी होता है, पता है तेरे को? पता नहीं। गंड मरा है ना तो देखो कैसे पता चलेगा? गंड मरे लोगों को तो ना पता रहेगा ये सब। वो बहन का बोपड़ा हर गंड जगह मारा, फैले पड़े हैं। चुप गंड मारे, ऊपर माई के बेटा। चुप गंड मारे। अबे क्या झाटू सी रोब दिया है मेरे को भाई। इसका भले ऑफेंस ज़्यादा है बट इसमें ना क्या बोलते हैं, अपग्रेड नहीं कर सकते। अपग्रेड करने वाली चीज़ चाहिए ना भाई। कंपेयर गंड मरे। अबे यार भाई अब बंद करते हैं, बोल लग रहा है। कल खेलेंगे अब। इसको बंद कैसे करना है? सेटिंग में जाके क्विट कैसे करना है? मैप गियर एग्जिट ये रहा, सेव गेम। भाई ऑटोमेटिक सेव होता नहीं है क्या इसमें? होता ही होगा मैनुअल सेव। ओके, रीस्टार्ट फ्रॉम लास्ट सेव, एग्जिट टू मैनुअल, एग्जिट में। अच्छा ए एक्स वाई ए भाई। चलो भाई बंद हो गया। स्टॉप स्ट्रीमिंग। टिंग 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 टिंग।